you cannot come out of that pageant world. The ethics that you learn, the grace that you learn through the pageantry, and with the way you feel about yourself once you've passed through any competition, or if you've won any crown, you actually feel like you've done something. There's a contribution, to the society, to the most, to the positive, divine, feminine energy. I think all of that, it's all stuck in the head. So I'm never out of it. I'm never coming back. It's always there. Wow, super. सबसे पहले तो congratulations. I mean, you are all over. Like for your marriage, of course. I mean, you were looking so fabulous, and so was your husband. So I want to know. मैं ये भी जानना चाहूँगी कि what is that? Now that you're married, right? And Mrs. this entire show is about being the Mrs. Right. So what is your take on this? On take on match? No, on like being married and being the Mrs. For your partner. So I think with time, as I grew up, the concept of marriage, the constitution of marriage, it kept changing. It kept going to and fro. There were times that I was like, I will never get married. I never want to get married. There were times when like, oh my God, I really want to get married. There were times, we all face that as women, right? Yeah. But I think after getting married today, I can proudly say that I'm not an advocate of women are best or men are best. No, I think with my marriage with Apurva, it has made me realize that everything, we both complete each other. Men and women complete each other. It cannot be competitive. It cannot be, there's no competition. Things that what a woman can do, a man might not be able to do, and things and what a man can do, a woman might not be able to do. And let's accept that. There is no harm in accepting that, we do need men and men do need women. Wow. It is just as clear as that. And that is the concept of marriage. I think combining the two energies, I think you can create something that you are not even ready for it, right? Wow, just like a puzzle, right? And creating the whole beautiful picture out of it, like companionship. That's very beautiful of you and your partner. See, yes, one thing, Divya, there are a lot of women, who are not after marriage. They think that compromise is the only thing, and they give up on their dreams. So, one advice that you would like to give them. And first of all, also one thing, because it's a competitive industry, right? So, any message that you feel? I think everything is a competition in today's world, and I don't feel like marriage is the one that blocks your, pathway to achieve something. Or I think you have to break through right from the beginning. When you're born, there have been challenges, there have been competitions right from at a very young age. So getting into Mrs. India or Miss India or Mrs. India, however it is, whenever you feel the time is right, it's never too late. And I think the blockages are only with yourself, because once a woman decides to do something, she will do it. She will do it. So I think you just need to power that up. You just need to power that up. You don't need to be scared. And once you're true to your passion, true to your approach about what you exactly want in life, I don't think there's any energy or force that can stop a woman. Wow, I mean that was really beautiful piece of advice. Thank you so much. And अभी मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगी आप सभी के जो भी questions है, we have the gorgeous ladies waiting for you. आप जो है मैरिड वुमेन्स के ड्रीम पूरे कर रहे हैं और दिव्या जो है रिप्रेजेंट कर रही है मैरिड वुमेन्स को, और मैम ने जैसे कहा कि जितने भी महिलाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो सोचती है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है. Correct. आप बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप मतलब आपने ये इसकी शुरुआत की सीजन 1? Wow. So my best friend Divya has just got married. और मैं married, I am not married, मेरी शादी नहीं हुई है, but मैं एक pageant को represent करती हूँ जहाँ पर married women are representing themselves beautifully. तो अब reason ये था कि जब मैंने pageant किया था तो I was obviously जैसे दिव्या ने कहा कि once a pageant girl will always be a pageant girl. But जब मैंने अपना training institute शुरू किया था, तब मैं बहुत मैरिड विमेन से मिली जो ट्रेनिंग के लिए आते थे, एंड मैंने देखा कि उनके स्टोरीज जब मैं सुनती थी, हाउ दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स,
जब वो मुझे शेयर करते थे अपनी चीज़ें, तब मुझे ऐसे लगा कि व्हाई नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सपने तो आई थिंक सभी देख सकते हैं, उनको एक पाथवे दिखाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए टू गाइड देम थ्रू दैट लाइट। तो इसीलिए मैंने ये फ्रेंचाइजी ली और इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक पैजेंट ऐसा क्रिएट करो जहाँ पर विमेन कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म। जैसे साई इज अ डॉक्टर, बट साई ने जैसे कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती हूँ टू प्रमोट माई प्रोफेशन थ्रू अ क्राउन। तो एनीवन, आई थिंक एनीवन कैन बी अ पैजेंट क्वीन, यू जस्ट नीड समवन टू गाइड। तो आई जस्ट वांटेड टू बी दैट गाइड, और मुझे यही करना था, एक पैजेंट लॉन्च करना था, एंड टुडे वी आर डूइंग दैट, वी आर लॉन्चिंग द सीजन 1 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। दिव्या, आपसे जानना चाहूंगा, ऑड्रे आपकी दोस्त है और शादी से पहले आई एम श्योर इसके बारे में बताया होगा ऑड्रे ने आपको, क्या रिएक्शन था, और एज अ वुमन मैरिज के बाद क्या चेंजेस देखती है आपको? शादी से पहले ही नहीं, आई थिंक इसका ये सपना पिछले कई सालों से था जो हम डिस्कस करते थे, दैट यू नो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, एंड यू नो बिकॉज हम दोनों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, you know, going through that journey and the confidence that we got, the things that we learned, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमें ऐसा लगा कि अभी जो हमारी नॉलेज है वो आगे पास होनी चाहिए। We should do that for people, for married women especially, because उस टाइम पे उनको कोई गाइड करने वाला मिला नहीं था। And I feel after marriage कुछ बदला नहीं है। I feel honestly there is nothing more. In fact things have only been amplified. मुझे जो फायर मेरे अंदर है वो और पुश करने के लिए, there's a strong muscle man standing right next to me who is pushing me through everything. और जितनी ज़्यादा मैं शेरनी थी तो he is you know like giving me full throttle support. So I think I've become more wiser, more confident and more calm. अपूर्वा कितना सपोर्ट करते हैं? अपूर्वा को तो मैं बोलूँगी अगर पहाड़ तोड़ के लेके आना, he'll do that also. He will support in anything. But because that's only because he believes in me that you know I'll never do anything जिससे मुझे परेशानी होगी या मैं उदास रहूँगी. I think his priority in his life for me, towards me, is only my happiness. उसको जब तक मैं हंसते हुए दिखूँगी सब ठीक है. जब मैं हंसते हुए नहीं दिखूँगी then it's a problem for everybody around. So cute. Also ऑड्रे, आपसे जानना चाहूँगा जो नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में अगर कुछ बताया आप हमारी ऑडियंस। परफेक्ट। तो हमारा ये जो सीजन 1 है ऑफ नेशनल पैजेंट, तो हमारा जो ये सीजन 1 है जो ऑफ नेशनल पैजेंट, ये होगा आफ्टर मॉनसून्स, एंड क्योंकि हमारा इंटरनेशनल पैजेंट होता है विंटर्स में, तो इसलिए आफ्टर मॉनसून हमारा ये नेशनल पैजेंट होगा, वेयर वी विल हैव ऑडिशंस फॉर विमेन। रजिस्ट्रेशंस अभी यहाँ से शुरू हो गए, सो यहाँ से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी हैव द रजिस्ट्रेशन जो ऑन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद द लेडीज विल रजिस्टर, इनका ऑडिशन होगा, out of which shortlisted ladies will go till the semi-finals and then be the finals. And finals में हमारा obviously there will be a proper stage, उनका 1 महीने का training होगा, and then training process के बाद they'll be taken through a training process with the best people from the fashion industry, and after the training जो 2 winners हो गए on the finale, they will be representing, one will be representing at Mrs. Grand International and the other will be representing at Supranational World internationally. ऑल्सो इंडिया में कितनी जगह पे ऑडिशन होने वाले और कैसे, मतलब क्या क्या कैटेगरीज होगी या फिर क्या क्या क्राइटेरिया होगा जब आप वुमेन्स को मतलब सिलेक्ट करेंगे या फिर? Perfect. So obviously Mumbai being the city that is prime, so Mumbai में audition होगा, plus मैं गोवा से हूँ तो गोवा में तो audition होगा ही, and apart from that I have seen a lot of women जो Delhi and you know from north we have a lot of women जिनके बहुत सारे सपने, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो, so we have a lot of mom bloggers जो दिल्ली से है, नॉर्थ ईस्ट से है, we have Bangalore that we are targeting, so these are the major places that we are targeting. Auditions तो obviously pan India होगा. After that the criteria to be selected, we have absolutely no criteria. The woman should be above 18, married legally, and it is okay if you are a MS category, which is a separated category, or a divorce category, so that comes under the MS category. So you can be a Miss category as well, not MISS but MS category, and we definitely have no height bar, and you can be the way you are, because the only thing about the training process married women के लिए ये है कि हम उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से ले जाते हैं। तो हमारा आइडिया ही ये है कि हम आपको ग्रूम करें, हम आपको इंस्पायर करें। हमारे जो बेस्ट मेंटोर्स हैं ये इंडस्ट्री के, they will come forward, they will train you for the process, they will make you a queen, और तब आप
represent करोगे. So there is absolutely nothing specific, but yes, you need to have that confidence. और बाकी का आप हम पे छोड़िए क्योंकि हम आपको best training देंगे. Training is the best. Exactly, training is the best. क्योंकि I think training makes a man perfect. हमने भी जब मैंने मिस इंडिया किया था तो मैंने 7 साल की ट्रेनिंग की थी. And pageant में आना और ट्रेनिंग करके आना is very important. So that's what we're going to take you through. Divya दिखेगी during grooming session and all. Of course. You really think Divya दिखेगी? Of course Divya दिखेगी. She will definitely be there. Always. Audrey, since अभी हमने बात की कि दिव्या की शादी बहुत चर्चे में है. You were the one who organized her wedding besides being a friend also. What was the idea behind ये successful marriage? कैसे planning की थी, क्या था उसकी? So Divya had a very beautiful story. जो जब दिव्या ने मुझे बताया कि ऑड्री मुझे शादी ऐसे एक पर्टिकुलर वे में करना है, दिव्या का विजन ये था कि नंबर 1 कि वो अप्पू से जैसे मिली जहाँ मिली उसे वो पोर्ट्रे करना था. सो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे जगह पे हुए हैं जहाँ पर दिव्या और अप्पू पहले बार मिले थे एंड जहाँ से इनका लव स्टोरी शुरू हुआ था. सो वहाँ पर एक इवेंट हुआ था. फिर दिव्या इज वेरी क्लोज टू हर हाउस, टू हर फैमिली, टू द एंटायर सराउंडिंग विद फ्रेंड्स. अगर आप देखोगे दिव्या के friendship with people is very beautiful. So hence most of the rituals were again done at home. And then after that Divya ने बोला था forest theme करना था. अब मिला नहीं forest. forest हम forest नहीं ढूंढ नहीं पाए. तो हमने forest दिव्या के घर पे ले आए तो हमने पूरे पेड़ लगाए. नहीं, all the animals, my friends, they were all there. We were all So there. जंगल के जो जानवर है वो सारे मौजूद थे, बस पेड़ पौधों की कमी थी, बाकी सब सही था. So I think I was sticking to the forest team anyway. Yeah. And Divya was very creative. I really like one thing about Divya is that Divya बहुत easy to go bride थी. तो मैंने बहुत सारे brides देखे क्योंकि last year I think बहुत शादी season था तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी and I have seen brides being so panicking about things कि नहीं ऐसे कपड़े पहनने, ये करना है, वो करना है, मेरा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं. दिव्या was so smooth कि दिव्या को अगर हम कुछ बोलते भी थे तो दिव्या is like हाँ ठीक है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, let's go with it. So she was so smooth about the entire process and I think that is something that also made her have a successful wedding. And I think we all as people and friends bonded so well. So वो हमने एक बहुत beautiful relation सबने एक दूसरे के साथ वहाँ पे create किया. So we had beautiful memories. It was a very 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 nice wedding. Right. Side आपसे एक सवाल है. What inspired you the most to get into this pageant and आप क्या कहना चाहेंगे दूसरी लड़कियों के लिए जो who wants to get into this pageant and अपने आप को इस मुकाम पे लाना चाहते हैं? Thank you for the question. Inspiration is obviously the surrounding women whom I see in day-to-day life. Every woman has a different story. But मेरे लिए fitness बहुत मायने रखता है. And I want कि लोग ये अपने lifestyle में ले आएं to be fit. क्योंकि वैसे तो don't take it otherwise, मर्द तो हम हर दिन सकते हैं, कोई किसी कहीं पे भी. पर थोड़ा सा fit हो लें. At least India जो diabetes के capital अभी we know that India is the diabetic capital of the world. At least वो हट जाए, वो tag हट जाए हमसे. और ये जो high cholesterol, high BP की जो अभी चल रही है, मतलब like India is becoming the cardiovascular disease center, right? थोड़ा बहुत अगर हम मेरी तरफ से if I help the women to realize that they can be fit, they can change their lifestyle. घर में the woman is quite responsible for taking care of the child, the entire family. So अगर थोड़े बहुत changes जो हम अपने lifestyle में ले आते हैं और उससे मतलब health conditions सही हो जाती है, better हो जाती है. So that was the first reason I was into fitness, and then I thought that I also wanted to promote child education. And Odisha is not a very literate state. Past 7 years it is growing. So I just wanted to promote education also, and especially women education. I help my own home, जो हमारे homemaker हैं वो एक उनकी बेटी को मैं पढ़ाती हूँ. तो मेरी यही कोशिश है कि थोड़ा बहुत efforts अगर इस pageant के through से लोग मुझे जानते हैं और वही efforts मैं अपने state में अपने country में ले आऊँ जिससे कि थोड़ा बहुत change हो जाए. So that was what it was all for.
Thank you so much. Thank you. Well, any more Thank you questions? so much for coming, everybody. Thank you. All